काव्य अलग है और भक्ति आंदोलन। आंदोलन क्यों पैदा हुआ, उस पर ग्रियर्सन का क्या मत है और शुक्ल जी का क्या मत है, जैन प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है, या और विद्वानों का क्या मत है, उसके अनेक ऐतिहासिक कारण हैं, उन पर फिर कभी विचार करेंगे। इस समय के अंतर्गत इस तरह की संभव था, हमारे सभी विद्वान ने अपने विचारों से हमें लाभान्वित कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और सबसे अधिक आप सबके प्रति जिन्होंने बड़े बदोयों के साथ थोड़ा विलंब से समाप्त कर पाए हैं, उसके लिए क्षमा याचना। मैं माननीय अध्यक्ष और आदरणीय वक्ताओं को इस सत्र में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारा दूसरा सत्र बस कुछ ही मिनटों में आरंभ होगा। Our speakers are A.P. Maheshwari ji, Ma Sharma ji, Prabodh Parekh ji, Sandhya Purecha ji, and Sudha Seshayan ji. Sharon Lowen is a renowned classical performing artist, recognized for her perfection of style, grace, and abhinay. She has performed her choreographies in several Indian languages, alongside the repertoire of her guru, Padma Vibhushan, Guru Kelucharan Mahapatra. Sharon is the founder of Manasa, Art Without Frontiers, and has authored several books. A.P. Maheshwari ji is an IPS officer of 1984 batch. He has been decorated with the President's Medal for Distinguished Services, Police Medal for Gallantry, and a dozen other decorations for internal security, operational excellence in different areas, and administrative acumen. आपको CRPF के प्रमुख के रूप में चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार और प्रकाशन के लिए गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। Ma Sharma is a senior journalist, graduate in science and literature. He has a vast experience of 33 years in journalism in print, electronic and digital media, both in Telugu and English language. Currently, he is the managing editor of the oldest Telugu daily, established in 1908, Andhra Pratika. Prabodh Parekh ji प्रमुख गुजराती कवि और कथाकार, विजुअल आर्टिस्ट और वृत्तचित्र निर्माता हैं। आपने 1974 से 2005 तक मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया है, जहां से आप दर्शन शास्त्र विभाग के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए। Prabodh Parekh ji has been awarded fellowships at the University of Sorbonne, Paris, and also the Charles Wallace Fellowship. He is the recipient of several state-level awards. मुझको संध्या पुरेचा जी दिखाई नहीं दे रही हैं। She hasn't come. Sudha Seshayan is the former Vice Chancellor from the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University at Chennai, has been a medical doctor, teacher, administrator for over 30 years. She has more than 30 titles to her credit in literature, spirituality, history, biography and social values. लोकप्रिय तमिल पत्रिकाओं में आप नियमित स्तंभ लिखती हैं। आपने 3 खंडों में एनाटॉमी की एक पाठ्य पुस्तक संपादित की है। She has compiled the translated version of the Britannica Concise Encyclopedia in Tamil and few quiz books. आपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक का तमिल में अनुवाद किया है, जिसका लोकार्पण भी स्वयं डॉक्टर कलाम ने ही किया था। I request the chair, Sharon Lowen ji, to kindly take over the proceedings of this session. Thank you. Yeah, it's working. It's working. Okay. Thank you, Sadhana, and thank you all for being here. And we're all very appreciative and grateful to the Sahitya Academy for including this session, because it is about how important literature is to all of us in so many fields. So I have been warned by Sadhana that we must stick to the time, so I request everyone to do so. Let me start with A.P. Maheshwari. Yes, please, if you would start. I don't know the topic. No, don't start this now. His is first.
यहाँ उपस्थित मंच पर सुधीजन जितने मेरे साथ हाजिर हुए हैं और जितने श्रोता यहाँ उपस्थित हैं और जो कि लिंक से जगह जगह से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। शब्द से ही सार लेकर व्रत को अब तोड़ना है और शब्द की ही साधना से चक्र को अब बींधना है। इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई है और हमारी जितनी मनोभावनाएं हैं, जितनी अनुभूतियां हैं, उसकी अभिव्यक्ति भी शब्द से होती है। और शब्दों का जो सरस समागम है, जिसको हम साहित्य के रूप में जानते हैं, वो स्वयं में एक समेकित कला है। और जिस शब्द से आप जुड़ जाते हैं, अगर नींद में भी उस शब्द से पुकारा जाए तो आप जग जाएंगे और किसी कोलाहल से आप नहीं जगेंगे। ये शब्द की महिमा है और ये उस साहित्य की महिमा है जो कि एक सतत सरिता के रूप में हमारे सामने रहता है। अब वो संगीत हो या नादों का मिश्रण हो, तो ताल और लय में यदि सुर जुड़ जाता है तो उसका जलवा ही कुछ और हो जाता है और वहाँ से हमें अनेकों जीवन मंत्र विस्फुटित होते हैं और वो जीवन मंत्र हमें अनंत शक्ति के अस्तित्व का भी आभास कराते हैं। तो यह है शब्द और साहित्य की महिमा। जहाँ तक दूसरी कलाओं का प्रश्न है, शब्द हमारी आस्था का प्रतीक है और वो आस्था हमारे जीवन का रुझान बनाती है और जो रुझान हमारा बन जाता है, उसी हिसाब से हमारे अंदर जो छुपी हुई कलाएं हैं वो विस्फुटित होती हैं। तो कला को जो मूर्त रूप मिलता है वो हमारी आस्था और हमारे रुझान से मिलता है, जिसमें साहित्य का एक बहुत अच्छा रोल है, बहुत अहम भूमिका उसमें है। अब कबीर से मीरा तक आप ले लें, या तानसेन से भीमसेन तक, या साहिर लुधियानवी से गुलजार साहब तक, तो सभी ने कहानी के मर्म को और पात्रों के कैरेक्टर को अच्छी तरह से निखारा है अपने शब्दों की कारीगरी से और हर एक मंचन को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। नाटकों से फिल्मों तक अगर हम जाएं तो वही शब्दों की कारीगरी भावों को सशक्तता प्रदान करती है। और एक ही फिल्म मैं उदाहरण दूंगा, नया दिन नई रात, जिसमें कि मुख्य नायक सारे श्रोताओं को 9 के 9 रस में डुबकी लगवा देता है। और अंग्रेजी साहित्य की बात करें तो शेक्सपियर के बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुआफिक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी युगों को एक सूत्र में बांधने का मादा रखता है साहित्य। शिल्पकारी का अभी जो चुनौती हमारे सामने आई, जब भगवान के भव्य रूप को बाल अवस्था में दिखाना था, तो योगीराज अरुण, उन्हें जो भी अपनी आस्था थी आंतरिक, उसको तो जागरूक किया ही। उन्होंने कई ग्रंथों और काव्यों का अध्ययन किया और उसके बाद वो भगवान के विराट रूप और बाल रूप में सामंजस्य स्थापित करके और अपनी प्रतिभा को अव्वल दर्जे तक पहुंचा पाए। तो ये जो है, जितनी कलाएं हैं, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो वो साहित्य के इर्द गिर्द घूमती नजर आएंगी, क्योंकि साहित्य मात्र विवरण प्रस्तुत करता है और इतिहास मात्र विवरण प्रस्तुत करता है और साहित्य उसको एक कथा पटल पर ला करके भावों की अभिव्यक्ति प्रदान करता है और एक सजीव चित्रण हम सभी के सामने लाता है। कहते हैं कि एक चित्र और एक छाया चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है, लेकिन अगर उसी छाया चित्र के नीचे हम एक मार्मिक पंक्ति लिख देते हैं, उदाहरण के तौर पर एक बहुत ही सुंदर चित्र के नीचे लिखा था, देखे तुझे जो एक नज़र होश में फिर वो आए क्यों, तो जो भाव है वो और भी ज़्यादा पुष्ट हो जाते हैं और उसको लाखों गुणा इजाफा उसमें हो जाता है। कलाओं के नए नए रूप जीवन शैली के साथ आ रहे हैं। अब पाक कला भी एक कला है और परिधान कला है, सौंदर्य कला है, वास्तु कला है, बागवानी भी एक कला हो गई है। कई तरह की कला जो जैसे जैसे जीवन शैली बदल रही है, तो जो साहित्य है वो उसमें लीड रोल लेता है। लीड रोल कैसे कि कला बताती है कि क्या किया जा सकता है,
लेकिन क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सारी चीज़ों को उभार करके लाता है एक साहित्य अपने पद्य में, गद्य में, जो कि उसको एक और गरिमा प्रदान करता है। हमारी जो भी चीज़ें नियंत्रित होती है इंद्रियों से नियंत्रित होती है। दृष्टि, श्रवण, सुगंध, स्वाद, स्पर्श, जो भी कला है किसी न किसी इंद्रिय को वशीभूत करती है, चाहे वो संगीत हो, चाहे कोई बहुत अच्छा शिल्प का नमूना हो। लेकिन इनकी एकीकृत संभावनाओं का सबल संवाहक उन सबको जोड़ करके जो आगे ले जाता है वो हमें साहित्य में मिलता है, क्योंकि वो शब्द से भावों को पिरोता है, और जब वो भाव शब्दों की कारीगरी से पिरोए जाते हैं तो उसमें हमारी जितनी भी परिकल्पना है उसको यथार्थ का बोध कराता है और हमको एक मुकाम पे ले जा करके खड़ा करता है। वो जो प्यासा तो मुझे ढूंढ ले पानी की तरह, जंगलों में हूँ मैं रहता लफ्ज़ों के मुआनी की तरह। और अब तो डिजिटल युग आ गया है, सारी कलाएं एक कंप्यूटर के क्लिक पे आ गई हैं। आपको फ़ोटो बनानी हो, आपको कोई भी मूर्ति बनानी हो तो पहले शिल्पकार करते थे, अब आपकी सॉफ्टवेयर सारा काम करती है। तो जीवन शैलियाँ बदल रही हैं। आप ये देखिए कि सोशल मीडिया की मानसिकता से हमारी मानसिकताएं बदल रही हैं, और जो डिजिटल लाइफ के जितने फरेब हैं उससे भी हम ग्रसित हैं, और जितने हम प्रकृति से विभक्त होते चले जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, तो नई नई गाथाएं आ रही हैं। लेकिन इनको समेकित रूप से लाता कौन है? साहित्य। क्यों? क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। तो जो प्रतिबिंब सामने आता है, पहले क्या हुआ, क्या गलत था, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, नहीं किया, हम घूम फिर के सारे प्रयोग करके वापस उसी पे जा रहे हैं जो कि अनुभवों पे आधारित था। तो उसको एक युग से दूसरे युग में लेकर के आता है। हमने किसानों को भी कहा कि भाई कृषि भी एक कला है, उसको हमने उससे छुड़ा करके पेस्टिसाइड उसमें धकेला और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से वापस उसको वहीं ले आए। कला, कोई भी चीज़ एक कला हो सकती है। तो जो युगों युगों को बांधता है और अनुभवों के आधार पर हमारे ज्ञान का विस्तार करता है, वो करता है साहित्य। तो जीवन की गति के साथ जो हमारे स्वरूप बदलते हैं उसको दर्पण की भांति प्रतिबिंबित करता रहता है साहित्य। इसलिए साहित्य सारी कलाओं से जुड़ा हुआ है। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि कलाओं में जिंदगी समाई होती है, कलाओं में जिंदगी समाई होती है, लेकिन साहित्य से समस्त सृष्टि की नुमाइंदगी होती है। आपने मेरे को सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, और साहित्य अकादमी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस आयोजन पे बुलाया। जय हिंद। Thank you so much for a wonderful presentation. May we go on to Ma Sharma. सबका प्रणाम। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। Since this is the dais named after Valmiki, I am first saluting Valmiki Maharshi. Is literature important to the other arts? This is the subject. Yes, it is very important. There is a great bond between arts and literature. Great works of art have inspired great works of literature. Similarly, great works of literature have inspired great arts. They are inseparable. Abhejya Kavita Swarup, like science and technology. Say for example, Sangeet and Sahitya. Sangeetam api Sahityam Saraswatcha Stanadvayam Ekam Apata Madhuram Anyad Alochanamrutam. There is a science in art and there is art in science. Music is a combination of art and science. Vagardhavya Sampraktau Vagardha Patipattaye Jagatah Pitaro Vande Parvati Parameshwaro. Vag or Artha. Literature
and art are the same, literature has a natural kinship with the other arts. Play, drama, films, Yakshagana, etc. All arts have been based on literature. Many ballads and dance forms are based on stories and poems. Music, dance, and poetry are accompanied in classical dances. Most importantly, our fine arts, Lalita Kala, are all the incarnation of literature, we can say. The importance of classical literature and arts of our nation to be recaptured. Each form of art is significant in its own way and made a unique contribution to the growth of the nation. Literature and culture make use of the true resources of our nation. Literature and arts have a significant influence on all our lives. All forms of art represent nature's inherent beauty, and art and literature are two of the fundamental forms of human expression. Both forms of expressions have the power to capture the imagination, elevate the human spirit, and transcend time, culture, and geographical boundaries. These are vital in shaping human history and culture. Both help us develop empathy, gain insight into different cultures, and challenge our perspectives. In a nutshell, art and literature are powerful media of expression that provide us with a profound understanding of the world. We must continuously follow and support literature and arts. Namaskar. Thank you so very much. That was very important. Of course, the question, is literature important to other arts, is a rhetorical question. Obviously, it's important to everything, but we're all enjoying expounding a little bit on how that's so. So now I'll request Pramod Parekh to give his presentation. I request that the audience kindly maintain silence and allow our speakers to speak. Thank you. Namaskar. I thought it would be a good idea to play around with this title of this gathering. Literature, does it matter? In what sense does it matter to other arts? Why not turn it around and say, other arts, do they matter for literature? And then we will have some very, very interesting openings. Primarily, the question makes us think about the conflict and the collision of poetics. Let's not get overwhelmed with the simple fact that most of us talking here, at least I who am talking here, is coming from literature, so there is a sense of soft corner that we carry for that. I want to unsettle that soft corner. Literature is fine. It's very crucial that the madhyam, its medium, its words, both the spoken and the written. So the oral traditions of literary practices as well as the written traditions of literary practices has its own sadhana, has its own commitment, has its own discipline, which needs to be continuously, single-mindedly to be cherished and nourished. And in that sense, it very significantly keeps a little distance from other arts. So much the better. Even though, as I said, there is a collision between the two that has been going on for centuries. And therefore we have words like
Sangeet Kavya, Kavya Sangeet, and Natya Kavya and Kavya Natya, and so on and on, where these boundaries get little blurred, and in a very rewarding way for those who practice literature. I'm not very sure if it gets blurred in a very rewarding way for other arts, though there are exceptions. So if you are a dedicated, just as literature is dedicated to the sadhana of words and everything that stands for it, and it also is dedicated to the traditions which are received in literary practices, both oral and written. So it is very crucial for one who wishes to announce oneself as a man of letters, practicing literature, it's very crucial that he or she commits herself or himself to thrive on those who have practiced literature before and are practicing now. You owe it to yourself to know the traditions that you come from, of the language which you speak or which you wish to express yourself into. You have to be very familiar with those traditions of literary, oral and written practices. That's your game. Just as it's very crucial for any gharana musicians or any gharana dancers or any gharana painters and all other art practices to be committed single-mindedly to the traditions that they have received. And that's fine. Those boundaries are worth maintaining up to a point. The question begins to emerge as the boundaries begin to get merged. And in our own times, for various reasons, the boundaries are beginning to get blurred. There's a confusion of realms, a very rewarding confusion. And where does it arrive at the end? Very playfully and brilliantly is in an art practice called cinema, films. That's where it arrives, where it begins to feel comfortable playing around with words, with what literature has to offer in a limited way, playing around with what musical traditions has to offer, and of course all other arts are invited, including visual arts. But again, cinema also must be, quote-unquote, faithful to its own poetics. So even it suffers from the consequences of leaning out to other arts, and it has to negotiate it. So I'm tempted to think religion also as an art. It's a temptation I get. Because huge amount of literature and many other art practices has negotiated and engaged so much with religion in the sense in which I'm talking, not merely as a system of belief and faith, but a system of practices, which is full of varieties of ways of creating art forms. And as we know, from time immemorial, literature and other arts have inscribed in their system, in their poetics, quote-unquote, religion in my sense, as a way of practicing life. And that's an art. You can be an exceptionally, quote-unquote, committed to religious practices in such a way that it becomes an activity of the creative spirit engaging with the large number of issues. Because poetics for me, I'll give one line starting, not definition but a suggestion. All poetics are making sense of your being born and dying. It's between the two. And you have to make sense of it. And there the poetics emerge. The poetics that emerges in literature has its own distinct identity, which it is making serious efforts to keep going, the spoken and the written word. And the same is true of other disciplines. So if you are a student of music, the guru is not going to say, oh, okay, I'm glad you are so well read in contemporary Indian poetry or world literature, but you better settle down here 6 o'clock in the morning, 14 hours, 14 years, and then I will tell you that you are now ready to go and perform. That's the discipline I was talking. That's poetics of music. And when it comes to the last point I was making to start with, to get myself provoked and hopefully provoke few of you, that
what happens when these boundaries begin to collide, conflict? How do you retain a sense of sacred with your own commitment, which is, let's say, literature? Do you allow it to interfere? Take an example. There are some remarkable examples. An artist like Raja, when he takes a line or two from Kabir and puts it on his canvas, what's going on? A writer who begins to print his or her books or begins to perform, which is a very common practice, Ram Leela or any of the performances, the performative acts of literature are amazingly very close to all other arts without claiming anything special. It just naturally is woven into it. Another major example who has allowed these realms to be confused without giving up on each poetics offering something unique is Rabindranath Tagore. So you have, of course, him, a novelist who doesn't let other arts interfere, but he also begins to write dance dramas where he wants them to come together. So there are some fascinating ways by which our times have experienced, and it gets most well dramatically expressed in the world of cinema. Let's take up these questions, see where it takes us when we interact. Thank you, Pramodji. That was provocative in the very best way, and I'm very hopeful that we are going to have time for comments and questions at the end. So you can please feel provoked and come up with things